very good human being. A compassionate heart. A great humanitarian. He was a very caring, very dedicated father. महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे. He was a patriot. He was a man of few words. It has been a very nice and friendly relationship. बहुत meticulous थे. He had a very interesting career. मुझे कुछ भी हो जाए तो उनको हमसे ज़्यादा फिक्र रहती थी. अनोखे व्यक्ति थे. इश्क है अपने वतन से इश्क है मुझे इश्क है अपने वतन से इश्क है हाँ इश्क है अपने वतन से इश्क है मैं जीता हूँ तेरे लिए प्यारे हिंदुस्तान मेरे मैं जीता हूँ तेरे लिए प्यारे हिंदुस्तान मेरे. Born on the 5th of November 1930 in Madhya Pradesh to a blue blood family, he chose to enter public life and later joined the Congress, the party that had led the struggle for Indian independence. Arjun Singh began his career in Indian politics as a member of the Legislative Assembly of Madhya Pradesh in 1957. He subsequently joined the Congress in 1960. He was the Chief Minister of Madhya Pradesh on 3 occasions in the 1980s, Governor of Punjab for a period of 5 months in 1985, Vice President of the Indian National Congress under Prime Minister Rajiv Gandhi for a considerable period in the 1980s, and the Union HRD Minister in 1991 to 94 and 2004 to 9. Of the many hats he wore during his 5-decade-long political career, he really came into his own as Union Cabinet Minister. Let us hear from the people who knew him well. A compassionate heart, and in his own way, he was very rural, and in his own way, he was very modern. He was not only a sagacious politician, but he was also in many ways a very good human being. A great humanitarian. And he's a friend in need. He's always been very helpful and supportive. जो एडवाइस जिसको भी देते थे बहुत सिंसियर और बहुत सच्चाई के साथ. So could you tell us some anecdotes about your personal equation with him? His guidance, his benevolence, and most importantly, his unstinted support. I would like to underline that. When I came into politics, one of the key people who always, not necessarily outwardly, but whenever I went to him, always gave me his 100% unstinted support, and that's something I will always treasure. Non-political लोगों के साथ बहुत ही dignified उनका behavior रहता है, जैसे मेरे साथ. मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इतना अच्छा behavior हो सकता है. कुमार साहब के सामने हमें ये 50 साल मुझे बीत गया. साहब तो मुझे डांटा ही नहीं. For us, he was a very loving father, and although he was very busy, but whenever he could spend any time with us, it was really the most valuable moments of our life. He was a very caring, very dedicated father, and made up for all the little time that he spent with us. And my mother was a total housewife and the force behind whatever he did. अच्छे थे रिलेशनशिप. कभी कुछ ऐसे नाराजगी नहीं हुई कि हफ्ते 2 हफ्ते चले या कुछ हो 2 दिन हो. जो हुआ तुरंत हो गया, बात खत्म. And come hail or sunshine, even if she said it was day, even if he didn't agree to something, but he didn't disagree to her in public. That was the kind of respect they both had. कोई anecdote आपको याद हो कुछ with Mrs. Arjun Singh ji? Always very friendly, warm, motherly. Even we are both almost the same age, but she has been very kind and friendly. हम लोग, आप, मैं और अर्जुन सिंह जी तीनों आ रहे थे. भोपाल से दिल्ली छोटे प्लेन पे आपके. तो रास्ते में मुझे ख्याल आया हमारी कॉन्फ्रेंसी का एक गरीब टीचर था. उस वक्त टीचर की तनख्वाह क्या होती, वो और उसकी वाइफ दोनों मध्य प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में थे. तो उसने मुझे कहा था आप उनसे कह देंगी तो हम दोनों एक जगह हो जाएंगे. तो उस वक्त मुझे मौका मिल गया. हम ही 3 थे उसमें प्लेन में. तो मैंने अर्जुन सिंह जी से कहा तो उनका बहन जी कोई आप पास लिखा हुआ तो दे दिए. मैंने लिख के मेरे पास था बैग में, मैंने दे दिया. विदिन अ मंथ वो आया और उसने कहा मेरा ट्रांसफ़र हो गया, अब हम दोनों एक ही ज़िले में हैं, अलग अलग. When he made a commitment to somebody, till it was done,
it would revolve in his mind like a bee buzzes. बहुत करीब और बहुत मीनियल्स थे, जो बेसहारा थे, उनसे मिलने में, उनकी समस्या सुनने में, बात करने में, उनकी मदद करने में उनको बहुत सबसे ज़्यादा लगता था। एक हमारे यहाँ पंडित जी आए, तो उनकी वाइफ कैंसर था, तो वो आए तो उन्होंने कहा हमारी वाइफ को कैंसर है। उन्होंने झट से 50,000 रुपया कैंसर के लिए उनको सैंक्शन कर दिया। वो चले गए तो मैंने कहा साहब आप पहचानते हैं इनको? कहले हाँ। मैंने कहा ये आपके खिलाफ बड़ी बुलेटिन निकालते थे वहाँ। तो कहले कि ठीक है, वो ये निकालते रहे होंगे, लेकिन आदमी तो हैं। अंदर का एक कोमल मन वो सामने निखर के हर हमेशा आता था कि जब जो ज़रूरतमंद रहा उसको मदद करने में ये व्यक्ति कभी पीछे नहीं रहे। तो और उस रूप में मेरे लिए एक आदर्श के रूप में उनका स्थान बना रहा। I think considering I spent a lot of childhood years with Nannan when I was in school, and I've also visited T.S. uncle in his own hometown. So the one commonality that I see is that they never both of them say no to anybody coming to see them at any point of time. From the platform of being a chief minister of one of the largest states of India, do keep in mind that at that point of time there was a combined Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Madhya Pradesh witnessed tremendous amount of development with regard to canal systems, with regard to dam systems, with regard to roads, all of that, whether it's the development of industrial cities like Palanpur, Bamur and others. So there were tremendous efforts that have been put in during his tenure as Chief Minister of Madhya Pradesh. The real development of Madhya Pradesh began and ended with him. If you see all the industrial areas which were formed in Madhya Pradesh, they were all during his regime. Whether it was Bhopal, Indore, Devas, Jabalpur, Gwalior, we had these industrial belts where a lot of industries were set up. And all the industrialists that you see today are people who were encouraged by him in his times, and they were all young people at that time. He had gone with a lantern for the coal research. It was he who discovered these mines, because people came back and told him that, you know, here the forest is so thick and wherever you dig you get something black. So he took a patwari and went on horseback in the night, and there are still people who relate those stories, and this is going back in the early 50s. So people in Singrauli have not forgotten him, but he did what he did for them in those years. And now we have the power capital there with all super thermal power stations. Shri Bhuvaneshwar Prasad Singh was the chairman of the Mining Corporation of Madhya Pradesh from the 28th of August 2000 to the 8th of December 2003. He acted as a catalyst for the work begun by Mr. Arjun Singh. Mr. B.P. Singh was instrumental in having surveys done in Singrauli district. He was a patriot. He was somebody wedded to the society. अर्जुन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में राजनीति में नेतृत्व की एक बड़ी और नई पीढ़ी का निर्माण किया, जिनको अर्जुन सिंह जी ने आगे बढ़ाकर कांग्रेस को नेतृत्व की एक नई पीढ़ी सौंपी. I considered him as one of my mentors because it was him, one of the people, one of the important people who inspired me to contest my first election. मिनिस्टर का विजन होता है, उसके पास अपने सोच होती है, तो फिर वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ब्यूरोक्रेसी करती है और सही करती है. He was always thinking ahead of times, and Madhya Pradesh has not seen another chief minister like him. He was always looking for opportunities to serve the downtrodden. I remember his 132 connection policy. I remember his pattas for the homeless. I remember something he did for the rickshawalas. So he was all the time looking for opportunities while he was in power to do something for the hapless. Person who stood for the poor and the downtrodden, the backward and the underprivileged. शहर में जो गरीब रहते हैं, जमीनों के पट्टे देने का जो एक काम किया, वो भी एक बहुत बड़ा सामाजिक काम था. The programs for the scheduled castes and the scheduled tribes, और जो सबसे कमजोर वर्ग था, वो उन्होंने उसको बहुत प्राथमिकता दी. जो हमारे ट्राइबल्स की थी, हमारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस था, उन्होंने जो भी योजनाएं बनाई उनके लिए,
आज भी लोग उन्हें उसके लिए याद रखते हैं। प्रजा के लिए जो आदरणीय दाऊ साहब ने जो कुछ किया है वो अभी तक किसी के बारे में ताप पे कोई जा ही नहीं सकता। उन परिस्थितियों में, गलियारों में जहाँ गरीब लोग बसते हैं, जहाँ आदिवासी लोग बसते हैं, वहाँ तक जाने का किसी ने प्रयास नहीं किया। और दाऊ साहब पहले से ही जुड़े हुए थे आदिवासियों से, उनके हर दुख दर्द को वो जानते थे कि क्या तकलीफ़ है, क्या दर्द है। दाऊ जब पद पे पहुँचे, सीएम हुए मध्य प्रदेश के, तो सारा चीज़ उनके विकास के लिए उन्होंने लागू किया, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ा। He always, throughout the period that I have known him, had the interests of the underprivileged, the downtrodden, the poor, always topmost in his mind. He believed in development paradigm that was for all and not only for a particular section of society. You have systemized corruption, you know, you have institutionalized corruption, and that is the reason why, whether it's Vyapam or whether it's even farmer suicides, one ingredient of farmer suicide, 65 farmers in as many days have committed suicide in Madhya Pradesh. There's a component also in that of corruption, because a farmer has to pay to get his quality certified. He's got to pay to stand in the line. He's got to pay for everything, and that's why he doesn't get the right price. This is the big difference. We never had any farmer suicides in those days when Mr. Arjun Singh was Chief Minister. The farmer is the same, but there were no suicides. Equity and fairness to the farmer was also one of his priorities. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने आदिवासी समुदाय और वंचित तबकों के सशक्तिकरण के लिए साहस भरे कदम उठाए। A person from a feudal background, if he can speak on a public platform saying that these days of feudalism are over and we are to move into a society and make society which is much more equitable and which has a greater share for a largest number of people possible. मैं समझता हूँ मेरे अर्जुन अंकल एक अनोखे व्यक्ति थे इस मामले में भी। तेंदू पत्ते का पूरा कारोबार जो निजी हाथों में था, और वो एक बड़ा भारी वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप था, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट तोड़ना और उस तेंदू पत्ते के व्यापार को सहकारी समितियों के हवाले करके जो गरीब आदिवासी और उसमें भी खासकर तेंदू पत्ता बीनने वाली महिलाएं होती हैं, तो उनके हित में एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया। जो वन लघु प्रोडक्ट्स हैं, उनको बड़े बड़े व्यापारी उनका शोषण करते थे। They would exploit. So he set up a system of collection. He set up societies, and they were not exploited. आदिवासियों को पढ़ाने की बात, उस समय स्कूल नहीं हुआ करता था, लोग उसका महत्व नहीं जानते थे। उस समय वो मुख्यमंत्री रहे तो बहुत सारे अपने क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में स्कूल उन्होंने खोला, छात्रावास उन्होंने खुलवाया और आदिवासी बच्चे स्कूल जाने लगे और पढ़ने लगे। आज कई तरह की नौकरियों में चले गए। ये दाऊ साहब की कृपा रही आदिवासियों के प्रति। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद चंबल को डकैत समस्या से करीब करीब मुक्त करा दिया। ये जो आत्मसमर्पण डकैतों का हुआ उस वक्त, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक घटना थी। And I must say, Phulan Devi had met me as well, and she was such a devout bhakt of my father's. अर्जुन सिंह जी की सबसे बड़ी खासियत ही ये थी कि वो कभी भी अपनी आलोचना से नाराज नहीं होते थे। उन्होंने कभी किसी व्यक्ति पर इस बात से कोई नाराजगी जाहिर नहीं की। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में मध्य प्रदेश में पत्रकारों के हित की जितनी योजनाएं लागू की गईं, उतनी कभी किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं की गई। उनके जमाने में पत्रकारों की सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया गया। I was prominently appearing and doing a lot of legal work for PUCL, which was then considered to be anti-establishment. Justice Tarkunde, Arun Shori and all these people, and a lot of other people. I still remember it was 82. He came as Chief Minister to Jabalpur in one of the dinners held at a minister's house there. I was also introduced to him, and somebody just laughingly told him, jokingly, "Sir, Vivek is mostly appearing against the government these days in all matters." He says, "Then he's a bright boy. This is the best way to come up." So now this is how he looked at things.
सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत भवन की स्थापना और भोपाल को देश की सांस्कृतिक राजधानी बना देना ये कोई मामूली बात नहीं थी। और रूहानियत अपने अंदर की रोशनी ढूंढती। Bharat Bhavan, which became an icon for everybody to try and emulate. Nobody could do it. So the gentleman had a very wide vision. He is fondly remembered in Chhattisgarh even today. आज भी अर्जुन सिंह जी की छत्तीसगढ़ में जबरदस्त इज्जत है, मैं बता रही हूँ। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नहीं होते हुए अपनी वाइफ को लेके उनको श्रद्धांजलि देने आए। इससे बढ़कर और क्या हो कि उनकी रिस्पेक्ट करते थे। Mr. Arjun Singh performed a stellar role as the governor of Punjab when the state was insurgency infested during the 80s. दूसरे कार्यकाल में अर्जुन सिंह जी सिर्फ एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। उनकी शपथ हुई और अगले ही दिन उनको ये निर्देश दिया गया पार्टी की तरफ से कि आप पंजाब के राज्यपाल होकर चले जाइए। अर्जुन सिंह जी उन लोगों में थे जो विपरीत परिस्थितियों में भी चुनौतियों को स्वीकार करके और अपने काम को अंजाम देना जानते थे। वहाँ शिवमोहन सिंह जी डीजी के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने सूचना दी कि केवल लोंगोवाल से समझौते से बात नहीं बनेगी, ये जो उग्रवादी इनसे मिलना भी जरूरी है। तो उन्होंने पंजाब के आतंकवादियों के बारे में जानकारी एकत्रित की। उग्रवादी नेता बुलवाया गया, वो चंडीगढ़ के राजभवन में आया और उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर टेबल पर रखा। अर्जुन सिंह ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो शूट भी करना चाहो तो मैंने कह दिया है कि तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, तुम जैसे आए हो वैसे ही जा सकते हो। ये उसे समझाते रहे कि ये जो कुछ आप अपहरण कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, इससे जनता को जो तकलीफ हो रही है, माँ माँ होती है, बहन बहन होती है। जब आप किसी एक व्यक्ति को मारते हैं उसकी माँ पर क्या बीतेगी, बहन पर क्या बीतेगी। आप मुझे मार देंगे, मैं मर जाऊंगा, पर मेरी पत्नी पर क्या बीतेगी सोचिए। और ऐसा यदि आपके साथ हो तो क्या होगा। इस तरह भावनात्मक ढंग से उसको विनोवर किया। अब नया इतिहास बनाया जाए जिसमें पंजाब अपने गौरव को प्राप्त करे। इस पर वो बगैर कुछ कहे चला गया। फिर कुछ सूत्रों से प्राप्त हुआ कि वो सहमत है, आप जो कर सकते करिए। पंजाब में उन्होंने कुछ महीनों में ही संत लोंगोवाल और राजीव गांधी के बीच में एक अकॉर्ड साइन करा दिया, जो उस वक्त की बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। उस जमाने में जब पंजाब में आतंकवाद के दौर के बाद ये कराना कोई मामूली काम नहीं था। He was one of the principal architect of the Rajiv Gandhi Longowal Accord, which brought the phase of militancy to an end over a period of time. He started out in national level politics as Minister of Commerce and later Minister of Communications in the 1980s. Subsequently, he made significant contributions to the field of education in India as HRD Minister in Narasimha Rao's cabinet in the 1990s and in Manmohan Singh's cabinet in the 2000s. He has the longest innings in the Ministry of Human Resource Development or Education after Maulana Abul Kalam Azad. He has had a very sterling tenure at the center, where he really spearheaded tremendous amount of reform and most importantly, accountability. He was the one who brought in the AICTE Act, which laid a regulatory framework which was previously unregulated, which was very important. हुनर का नाम आपने सुना होगा, जो स्कीम है HRD, वो अर्जुन सिंह जी की चलाई हुई और सबसे पहले उन्होंने बिहार में शुरू की थी। और उसका मकसद ये था कि लड़कियां जो हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट हो।
when I was Minister of Telecom and Post. I was looking at reforming the postal department, and we brought in Project Arrow, which was a complete business process restructuring of the department, along with McKinsey and other firms. And at that point of time, I really wanted to empower our Dakia, our GDS, Gramin Dak Sevak on the ground. And when I went and met over about 40,000-50,000 of them in 3 or 4 states, there was a tremendous urging that though they are government employees, they were not considered as such and didn't have access to education for their children in Kendra Vidyalayas. And so I went to Arjun Singh JI with that request. And I must say, after I met him 2 or 3 times on this, he simply assured me that please go and send the signal that every Gramin Dak Sevak will be treated, as far as my department is concerned, in every term as a government employee, and his child will be given admission in Kendra Vidyalayas. Now that is a very important message that an HRD minister is sending out to almost 2.5 lakh employees across the country. यूपीए सरकार में रहते हुए शिक्षा जगत में आधुनिक और प्रगतिशील सोच की नींव को मजबूत करने के लिए भी उनकी सराहनीय भूमिका है. As HRD Minister, Mr. Arjun Singh took a very bold and progressive move by instructing bureaucrats to draft a policy for AIDS awareness in high schools with some degree of candor. It was during his tenure that the Right to Education Bill, mandating free primary education in a school in one's neighborhood, was introduced, which subsequently acquired statutory status. He also introduced policies favoring inclusion of differently abled children in mainstream educational institutions. Mr. Arjun Singh had suggested a central madrasa board to regulate madrasa education in such a manner that religious education would be supplemented with modern and technical education. Mr. Singh's suggestion was welcomed by some Muslim intellectuals who felt the proposal was in line with progressive integration of Muslims in the Indian national mainstream. But it was opposed by large sections of the Muslim clergy. वो जो रिएक्शन होता है ये तो हमेशा से हो रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है. वो उलमा हो या दूसरे लोग हो, वो एक तरक्की पसंद जो रास्ता होता है उस पे चलने की बात है, क्योंकि ज़माने के साथ साथ समस्याएं बदलती रहती हैं. As HRD Minister, Mr. Singh was instrumental in the establishment of the Maulana Abdul Kalam Azad Institute of Asian Studies in 1993, commemorating the Indian nationalist leader and India's first education minister, Maulana Azad. When he was in Parliament, he did his homework very well. He didn't have to refer much to notes because he had, he was prepared for everything, and he had gone into the subject very well. Mr. Arjun Singh, being the eloquent parliamentarian that he was awarded the Outstanding Parliamentarian Award for the year 2000. It was conferred in 2005. Mr. Arjun Singh was known for his firm commitment to religious pluralism and communal harmony. In his autobiography, he mentioned how in the early 1990s he had warned the then Prime Minister Mr. Narasimha Rao that if preventive steps were not taken, the Babri Masjid could be demolished. Mr. Singh warned Mr. Rao even one day before the tragedy occurred on the 6th of December 1992. He was a great champion of the minorities. He fought for their cause. He helped Jamia Millia Islamia a great deal. He was very involved in the minority welfare. When the Babri Masjid was demolished, he felt very strongly. 90 में उनके हार्ट का बाईपास सर्जरी हुई थी, तो एस्कॉर्ट्स में वो थे. अगले दिन जिस दिन ऑपरेशन होना था उनका सुबह, उस दिन की माने पहली रात को उन्होंने अपने हाथ से एक पूरा
लेख लिखा, मेरे राम रहीम तुम कहाँ हो। मैं जीता हूँ तेरे लिए प्यारे हिंदुस्तान मेरे। वो उन दिनों समाज में जो समाज के बंटवारे की जो बातें होती थी उनको लेके इतने विफल और इतने विचलित रहते थे, तो उन्होंने वो लेख लिखा। 90 में बाईपास आजकल तो बड़ा आसान माना जाता है, पर उसके एक दिन पहले अर्जुन सिंह जी देश और समाज की चिंता में एक लेख लिख रहे हैं। तो ये उनकी जो जीवटता थी और ये उनके जो संस्कार थे, इससे आज की शासन व्यवस्था में बैठे राजनीतिकों के बारे में तो बात ही करना बेकार मैं समझता हूँ। In my long association with him, I saw him shattered only once. That is after the demolition of Babari Masjids. He was a sad man, angry man. That is the only occasion I saw him shattered. That's how the differences between him and Narsam Rao ji came to the surface, and it led ultimately to his withdrawal from the cabinet. Mr. Arjun Singh, having served in conflict-ridden Punjab, took a keen interest in other conflict zones like Kashmir and the Northeast. He had been very vocal about the episode of the massacre of Hindu villagers in the Doda district of Jammu and Kashmir, declaring in Parliament in 2001 that ISI-backed terrorists had made Jammu and Kashmir India's killing field. सांप्रदायिकता के खिलाफ अर्जुन सिंह जी ने जीवन भर बिना थके पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी. Even while engaged in politics at the national level, Mr. Arjun Singh remained committed to the rights of Adivasis. On 15th March 2001, as an opposition leader, he asked in the Rajya Sabha if the then Union government planned to amend the fifth schedule of the Constitution dealing with Adivasi ownership of stipulated lands. The then Prime Minister, Mr. Atal Bihari Vajpayee, answered that the government had no intentions of amending the schedule. It was his concern that the government was going to amend various provisions of the law which gave the tribal security of land, but then it was not done. So he was always monitoring it, seeing what any government could be up to and which would dilute the rights of the most backward people. Adivasi property rights have been further strengthened through the Forest Rights Act introduced by the UPA in 2006. 2006 Act is nothing but a byproduct of the Congress mind. I'm sorry to say even today that the mechanism of the Act has not been implemented. Tribals are still looking for that right which they should get under that Act. It's a major issue inside Parliament, outside Parliament, amongst people, and I wish Arjun Singh Ji was alive today. Mr. Arjun Singh, as HRD Minister, had even advocated talks with Maoists in July 2007, while launching the second phase of the School Chale Hum program in Maoist-infested Jharkhand. वो सभी को समाज का अंग मानते थे और उनका मानना ये था कि अगर कुछ लोग भटक गए हैं और उन्होंने हाथ में हथियार उठा लिए हैं किसी कारण से, और कारण हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में ही मौजूद है, वो अपने को वंचित समझते हैं, वो अपने को शोषित समझते हैं, और कई बार उसमें शासन व्यवस्थाएं उनका जिस तरह से उनकी मदद करनी चाहिए वो नहीं कर पाई हैं। इससे उनके मन में ये भावनाएं आती हैं तो लोग हथियार उठा लेते हैं। नक्सलवाद के बारे में शुरू से उनकी ये मूल अवधारणा ही उनकी है कि ये हमारे ही समाज के अंग हैं, हमको इनसे बातचीत के रास्ते कायम रखने चाहिए। उन्होंने हथियार उठा के गलत किया, लेकिन कैसे हम उनको समझा बुझाकर प्रदेश की, देश की मुख्य धारा में वापस लाएं। When it came to the Northeast, as the Union HRD Minister, Mr. Singh laid the foundation stone of the Indian Institute of Management in Shillong in December 2007. He declared, quote, "The Northeast is on the march and it is not alone," unquote. In 2006, he had to deal with the challenge of a delegation of Nagas from Manipur opposing the supposed imposition of the Meitei script, an issue he handled gracefully. जो भी ललडेंगा से हुआ नॉर्थ ईस्ट में,
जितने भी अलगाववादी गुटों से उन दिनों की सरकारों के जो भी समझौते हुए, उनमें अर्जुन सिंह की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। Rajiv Gandhi, he was Prime Minister as well as Congress President. He entrusted both of us. I was General Secretary in charge of Northeast, including Mizoram. He entrusted both of us to negotiate with Lal Danga. Lal Danga was continuing a long struggle. But actually all the work was done by Arjun Singh JI. I was only just part of it, part of the team. That also was a challenging thing. He somehow persuaded Lal Danga to abandon arm and come to the mainstream. After several rounds of discussions, Lal Danga agreed. It's a magic, it's a miracle, because many of his cabinet colleagues, they were 100% sure this exercise is a futile exercise. Of course, he could have played a very major role in the times we are seeing today, whether it's the Northeast or whether it's Kashmir. So that's why he's very much missed. Few words suffice to describe Mr. Arjun Singh. Let us hear about how great his persona was. Every time he was able to overcome the difficulty and emerge unscathed. I think that is quite extraordinary. He's a man of very few words, but in those few words he conveyed what he had to convey. He would tell me what he could have told me in 10 sentences, he would tell me in one sentence. I've always known him to be a very, very silent worker. His pen would speak much more than his tongue. अर्जुन सिंह जी बहुत अच्छी बात ये लगी, वो अपने बारे में ही पूछते थे, कभी उन्होंने मर्यादा की सीमा का उल्लंघन करके और नेताओं के बारे में मैं क्या सोचता हूँ ये कभी नहीं पूछा। अर्जुन सिंह जी बहुत मेटिकुलस थे, बहुत पंक्चुअलिटी के मामले में। ये जो समयबद्धता थी उनकी, जिससे सीख लेनी चाहिए आज के बहुत से लोगों को। टाइम की पाबंदी भी मैंने देखा कि इतना उनमें समय के प्रति इज्जत थी और उसकी मान्यता थी, जो कि आम लोगों में नहीं मिलती। जिस स्तर की रीडिंग वो करते थे, वो अत्यधिक ऊंचे स्तर की रीडिंग थी। पढ़ने का इतना बड़ा शौक मैंने देखा, कोई अच्छी किताब निकले और वो वर्ल्ड में कहीं और अवेलेबल हो, वो आएगी। जो रास्ते में जैसे गाड़ी में चल रहे हैं तो हम लोग तो इधर उधर की बात करें, देखे वो पढ़ते रहते थे और पढ़ने का शौक ये उनका अद्भुत था। और एक इंटेलेक्चुअल ड्राई आदमी केवल नहीं था, एक इंटेलेक्चुअल जो केवल विचारों में घिरा हुआ हो। उनमें विचारों की गंभीरता कार्यों में परिणत होती हुई दिखती थी, वो ट्रांसलेट होती थी एक्शन में। अगर वो कुछ किताबें पढ़ रहे हैं और उन किताबों का कोई सार है, उनके शब्दों का, उनके अर्थों का अगर कोई सार है, तो पढ़ के अपने अंदर रख लेना मैं समझता हूँ कि आधी अधूरी बात है, कोई बहुत मायने रखने वाली बात नहीं होती। आत्मसंतुष्टि और आत्म विकास के लिए ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति ऐसे विचारों के संपर्क में आते और सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन में भागीदार बन सकता हो, वो एक उदाहरण मैंने अर्जुन अंकल में देखा। इंदिरा जी ने इनकी तारीफ की मेरे सामने। इंदिरा गांधी जी ने मेरे हस्बैंड के लिए कहा कि मैं इनके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, ऐसा काम करने वाला आदमी कम मिलते हैं। उनकी प्रशासनिक शैली, अनुशासन, कर्तव्यबोध और बुनियादी मूल्यों के प्रति गहरी निष्ठा पर आधारित थी। जवाहरलाल नेहरू जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अर्जुन सिंह जी ने कांग्रेस को अपनाया। It's not just being a confidant. You got to even have the competence. Somebody can be a confidant, but he need not be competent. Somebody can be competent, but not have the confidence. So he's had both. आज के ज़माने में उस दिल दिमाग के और उस विजन के लोग जितने ज़्यादा होंगे, मैं समझती हूँ हमारी आने वाली जनरेशन को और इस वक्त की नौजवान जनरेशन को उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। आज भी जब कभी कुछ मुश्किल निर्णय करने का मौका आता है, मुझे उनकी कमी ख़ास तौर से महसूस होती है। He was a fearless leader whose heart and soul blazed with patriotic fire.
We will always remember him with fond and grateful memories.